Am I live? एक बार चेक कर लेते जल्दी से। um, अगर कोई है यहाँ पे तो प्लीज हाय हेलो कुछ बोल दो. Otherwise I'll just start talking. Anyways, hello, welcome to A for Arsenal. I can see there is one viewer here. Welcome to you. Um, and welcome to another live. I really enjoyed my live yesterday. काफी मजे आए थे करने में. And so yeah. Hi, Lucky Reds. How are you? I saw you yesterday. Hope you're fine. Dinner winner hopefully कर लिया होगा if you're from India. And yeah, so we are going to do a live today, and I have a few things I want to talk about. Um, so the first thing we're going to talk about is KT ka future, return of Zinchenko, and Tommy at left back. Now, if you're a fan of Arsenal, Lucky Reds, are you an Arsenal fan? Because I think from your DP, I can barely say it, but I think you're a United fan. But anyways, hi Rahul, hi Rohan, how are you guys? So as I was saying, KT का future, return of Zinchenko, and abhi Tomiyasu at left back. Kal bhi when I was there with Nidhi bhai, there were plenty of questions related to, you know, what is happening at our left back. So first of all, I would like to ask whoever's in the chat, चाहे दो लोग हो, तीन लोग हो, एक लोग हो, if you're an Arsenal fan, if you're not an Arsenal fan, out of Kieran Tierney, out of Zinchenko, out of Tomiyasu, who do you think has been our best performer at left back? क्योंकि देखो तीनों प्लेयर्स काफी डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स हैं. हाँ लकी रेड्स, आई नो यूर यूनाइटेड फैन लग रहा था. But Lucky Reds, we'll talk about United as well today. Don't worry if you hang around for a bit. So, if you look at Kieran Tierney, he is somebody. Rahul, you're right. Thoda sa defense department mein there is a little issue. So Kieran Tierney is a traditional old school defender जिसको कहते हैं, जो हमारे पास जैसे पॉल मर्सन टाइप्स होते थे या ली डिक्सन टाइप्स थे. You know, Kieran Tierney is defensively solid. Attack maybe he's somebody who stays wide, and crossing uski अच्छी है, defense उसका अच्छा है, and of course off the pitch qualities he's one of the best. If you've seen the documentary, अगर आपने उसके interviews देखे, he's a leader. He knows how to take responsibility. He knows, मतलब he's a very honest plain guy who knows कि कब का क्या problem हो रही है. So I like KT because of that. Zinchenko is an is an Arteta signing for Arsenal. And if you think about it, matlab, he's the perfect Arteta player, right? Whenever he's played, लग रहा था कि बहुत seamlessly fitting कर गया squad में. There was no bedding in time required for someone like Zinchenko, who plays the passes well, whose defending is completely decent. मतलब he's not a powerhouse like Tierney, but on the ball he's very composed. जैसे सलीबा कभी कभी कर लेता है कि जब बॉल कोई बिहाइंड खेल लेता है, he'll just stop the ball, थोड़ा एक दो फेक शिमी करके he'll come across with the ball and pass it forward. जिनचेंको की सबसे अच्छी बात यही है कि he's very composed, he's great with his feet, he's a great passer. तो जिनचेंको की क्वालिटीज ये हैं, बट ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी इंजरी प्रोन पर्सन जो हमें दिख रहा है. मतलब कितना टाइम हो गया जिनचेंको को? कोई बता सकता है हमने लास्ट गेम जिनचेंको के साथ कौन सी खेली थी? बिकॉज नाउ ही इज एट बैक एट फुल ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, बट यार पता नहीं चल रहा है कि जिनचेंको ने लास्ट गेम कौन सी खेली थी आर्सेनल के लिए. विच इज वॉट राइट, कभी कभी लगता है कि जिनचेंको वाली साइनिंग वॉज अ ड्रीम, टू बी ऑनेस्ट. कभी हुआ ही नहीं, बस एक सपना था वो. बट एनीवेज, आई गेस वी ऑल न्यू कि दिस वॉज समथिंग वी वर साइनिंग अप फॉर जब जिनचेंको आया. And sometimes NLD Derby was the North London Derby was the last game, Rohan. ठीक है, so yeah, I mean North London Derby was on the 1st of October, so that was a month ago. So एक महीने से जिनचेंको नहीं गया है, and उसकी इंजरीज कोई ऐसी, like I said, ऐसी कोई इंजरीज नहीं है जो मिड मैच में किसी ने जोर से टैकल कर दिया या ही टुक अ नास्टी फॉलो या कुछ ट्विस्ट हो गया. इसकी सारी इंजरीज आर इन ट्रेनिंग, एंड आई एम गेसिंग अ ट्रेनिंग इज लेस इंटेंस देन अ मैच. चलो ठीक है, इवन इफ यू ट्रेन हार्ड समटाइम्स दैट माइट हैपन, बट यार ट्रेनिंग में इतनी इंजरीज हो जाना और फिर यू नॉट अवेलेबल फॉर द गेम,
It's very, very concerning. But Zinchenko, he does the left back inversion so well. तो लगता है कि मतलब he is one of the players जो Arteta would want. Um, he is in training today. Yes, you're right. He's in training today. अभी ही न्यूज़ आई थी कि Saka is also in training, and Lenny is in full training, and Zinchenko also is in full training. But so that is about Zinchenko. Tomiyasu, he's played left back, and I think he can play left back really well because वो ambipedal है, मतलब उसके दोनों पैर he is very strong with. And ऐसे बहुत कम प्लेयर्स होते हैं आर्सेनल के, अगेन आर्सेनल में सैंटी कजोर्ला लाइक दैट, नापोली में किविचा इज लाइक दैट. बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जिनके दोनों फीट बहुत स्ट्रांग होते हैं, यू नो. कहना नहीं चाहिए, बट आई थिंक मेसन ग्रीनवुड इज ऑल्सो समबडी हु हैड a strong left foot as well as a right foot. So टोमियासू की सबसे बढ़िया बात यह है कि ही इज़ अ डिफेंडर, ही नोज़ हाउ टू डिफेंड, ही कैन डिफेंड. राइट फुट स्ट्रांग होने की वजह से प्लेयर्स दैट कैन कट इन, एंड लेफ्ट फुट स्ट्रांग होने की वजह से प्लेयर्स दैट कैन गो वाइड ऑल्सो, एंड अटैक में भी ही कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट. जैसे हमने देखा था, कल भी निधि भाई के साथ बात हुई थी कि दैट गोल विच वी द फर्स्ट गोल वी स्कोर्ड अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट डजंट हैपन इफ टोमियासू डज नॉट मेक दैट इंटरसेप्शन. एंड दैट इज वेरी ट्रू. टोमियासू इज अ वेरी He's a very on-brand player for Arsenal. So इन तीनों में से केटी, जिनचेंको, टॉमी, क्या लगता है आप लोगों को कि who is somebody who deserves to be, who is your favorite left back out of all of this, जो आपके हर क्राइटेरिया को सॉर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्ट करता है? नो प्रॉब्लम बिप्रा, आज के स्ट्रीम पे आ गए हो, दैट्स गुड इनफ. खैर, फॉर मी आई डोंट थिंक ऐसा कुछ इशू हमारे साथ ऐसा होने वाला है कि इन तीनों में से किसी को जाना पड़ेगा. जो आजकल मैं धीरे-धीरे देख रहा हूँ, Rohan says, I think for Arteta, LV position will be a tactical one. He will choose what depends on the opponent, and I think that is perfectly spot on. जो रोहन ने कहा, the versatility we have in the left back position is something which all top teams either have or they should desire to have. चलो midfield में कुछ लोग ऐसी versatility देख लेते हैं, बट लेफ्ट बैक में भी ऐसी वर्सेटिलिटी होनी चाहिए. व्हेन यू हैव अ गेम जिसमें आपको पता है कि एन ओपोनेंट विल बी चार्जिंग डाउन टू यू, चलो यू कैन प्ले अ केटी और अ टोमियासू, यू नो, their right winger or their right side is very, very strong, and you need somebody who can defend both the inside and the outside, then you get Tommy. If you know you're going to have a lot of the ball, थोड़ा opposition weak है and left से काफ़ी सारे plays बनने चाहिए as well as the right से, you play somebody like Zinchenko. Thanks Lucky Reds again. Stream को एक बार like कर दो, like I said. And of course, if you haven't subscribed, जो I think सब ने यहाँ पे करा हुआ है, thank you so much by the way. मेरा प्लान था जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था कि वर्ल्ड कप से पहले 350 सब्स आ जाएं. करंटली एट 360 एंड आई एम सो हैप्पी. सो थैंक यू गाइस. कोई मुझे ऑल्सो चैट में जल्दी से बता दो अगर किसी को पता है कि मॉड कैसे बनाते हैं, किसी को मैं मॉड बना दूं जस्ट इन केस कोई स्पैम वैम करे, तो अवॉइडिंग ऑल ऑफ दैट ऑलरेडी. So yeah, like I was saying, like Rohan was saying actually, for Arteta, left back will be very tactical because that opponent will determine कि हम कौन सा प्लेयर खिलाते हैं. इसी सिचुएशन की वजह से आई थिंक ऑल थ्री प्लेयर्स विल हैव अ फ्यूचर. द बेस्ट पार्ट इज केटी को आप आगे भी खिला सकते थोड़ा लेफ्ट मिड में. टॉमी आंसू कैन फिल एट सेंटर बैक ऑल्सो. मान लो गॉड फॉरबिड हमारे किसी सेंटर बैक को इंजरी हो जाए, या फिर बेन वाइट का फॉर्म खराब हो जाए, ही गेट्स इंजर्ड, देन टॉमी आंसू कैन गो बैक टू राइट बैक. तो ऐसी वर्सेटिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. Vipra says, I think KT because he's a proper LB than Tomiyasu, though Tomiyasu played really well in that position. But I would pick KT over Tomiyasu. हाँ यार, I think केटी का हमने जो पैशन देखा है, केटी की जो हमने लीडरशिप देखी है, वो सब उस either you call it nostalgia or you call it whatever you want, but I think KT is a more proper left back than Tomiyasu. Tomiyasu plays really well, तो मतलब वो serviceable है. But I don't think
लॉन्ग टर्म उसकी हम वो पोजीशन रख सकते हैं, बट जैसे रोहन, आई विल गो बैक अगेन बिकॉज रोहन हैज सेड इट वेरी परफेक्टली दैट लेफ्ट बैक विल बी अ वेरी टैक्टिकल पोजीशन, एंड जो भी ओपोनेंट होगा बेस्ड ऑन दैट वी विल चूज हु गोस. सो इफ वी लुक एट द नेक्स्ट टू गेम्स जो है चेल्सी और न्यूकासल, चेल्सी का राइट साइड थोड़ा सा डाइसी है. उनका राइट विंग बैक nobody knows who's playing there. जिसको मॉड बनाना है आप उसको क्लिक करो, उसका ऑप्शन मिलता है. अच्छा ब्रो, आई थिंक मेरे को ये चैट से ही, यूट्यूब चैट से ही देखना पड़ेगा बिकॉज लेट मी सी एक बार. हाँ, 1 सेकंड, एंड देन विल कम टू द गेम्स अगेंस्ट न्यू कासल एंड चेल्सी एंड उसमें हमें क्या करना चाहिए. हम्म, दिख क्यों नहीं रहा यार. एक सेकंड गाइस. कंग्रेचुलेशंस लकी रेड्स, आप एक मॉड बन चुके हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर किसी को मॉड बनना है तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट, सॉरी, अगर किसी को मॉड बनना है तो ऑफ कोर्स यू मोर देन वेलकम टू आस्क मी टू मेक यू अ मॉड. बट ऑफ कोर्स द थिंग इज, I'm not saying you have to be here for every live, but for most lives, I hope you are here because moderating is a huge thing. And even if you've never modded before, you can always learn on the job. Simple सा काम है spam को रोकना. And if you are a moderator पहले से ही, then of course इसको तो फिर कोई problem है ही नहीं. हाँ, so now we have the upcoming games against Chelsea and Newcastle. Chelsea का है I think इस weekend Sunday को, and Wolves and Chelsea. Wait, एक बार मेरे को schedule देखने दो. Premier League app, Premier League fixtures. So the next game is Chelsea versus Arsenal. That is on Sunday. इधर के 12 बजे मतलब उधर के 5:30 बजे इंडिया में. एंड देन सैटरडे को वुल्व्स. Then when do we play against? Oh no, Chelsea play against us and Newcastle. Right, right, right. Thank you so much, Ashbin. I thought we were playing Newcastle. So then that changes a lot. I was actually under the impression that we play Chelsea and then we play Newcastle. So if we look at Chelsea, Chelsea's right side, um, if you look at Chelsea's right side, who plays at right wing back right now? So Reece James is out, so he's definitely not going to play. Uh, Sterling plays sometimes at right wing back, and then I think currently it's Ruben Loftus-Cheek or Azpilicueta, right? So अगर इन दोनों के against है, who would you have out of Kieran Tierney, out of Zinchenko, out of Tomiyasu, assuming all three are fit and ready, who would you have playing against Chelsea? Tab tak I'll look at a few questions. Zinchenko is Arteta's favorite. Even he was not fully recovered and still played in the NLD. Huh, because he's very crucial to our build-up. And Rohan, again, you're right. Um, he's Arteta's favorite. He's great for build-up play. He's great for our possession and attacking style of play. वो रिसाइकल अच्छे से करता है. लेट्स रिमेंबर जिंचेंको ओरिजिनली एक सेंटर अटैकिंग मिड है. तो सेंटर अटैकिंग मिड से मतलब ही नोज हाउ टू ऑपरेट इन एडवांस स्पेस एंड ही नोज हाउ टू ऑपरेट इन द मिडल ऑफ द फील्ड. दैट इज व्हाई प्रॉब्ली ही कैन डू द इन्वर्जन अ लिटिल बेटर. Wolves and Chelsea, thank you again, Ashwin. Rohan says sure will do. I'm guessing moderator वाला है. I'll make you a mod right now. Actually, hold on. कहाँ गए तुम? अच्छा ठीक है. Lucky Reds, if you don't want to be, can I remove you from as moderator then? अगर आपको नहीं बनना है तो कोई बात नहीं. Then I'll make Rohan. रोहन कहाँ गया? ये रहा, add moderator. ठीक है. So Rohan is now the moderator. So Rohan says that he'll play Zini. I think यही है. मैं तो हमेशा ही कहता हूँ Zini जब भी अवेलेबल हो जिनी को खिलाओ, क्योंकि पता नहीं जिनी कल हो ना हो. सिंपल सी बात है. जिनचेंको की इंजरीज कब आ जाए, कब वो उसकी फिटनेस चली जाए, कुछ पता नहीं होता. तो जिनचेंको जब भी आए
उसको खिलाओ, होप ही ड्रॉप्स a 8 on 10 और 9 on 10 परफॉर्मेंस एंड देन ही इज गायब फॉर अनदर मंथ. तो जिनचेंको बस वही है, नए चांद की तरह है, महीने में एक बार अच्छे से दिखेगा. एंड बस दैट्स यू होप फॉर द बेस्ट. बट होपफुली, जोक्स असाइड, आई होप जिनचेंको की इंजरी इश्यूज कम हो जाएं. um, what are my thoughts on Oba for Arsenal? I think उसको बिकॉज ऑफ हिज लास्ट सीजन एंड हाफ उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे थॉट्स कह रहा हूँ, बुरे वर्ड्स मिलते हैं. ओके लकी रेजल मेक यू मॉड अगेन. तो अभी के लिए आई थिंक दो मॉड्स तो सही हैं. सो ओबा, बिकॉज ऑफ हिज लास्ट सीजन, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, ही गेट्स अ रियली बैड रैप. बहुत गंदी रेपुटेशन होगी उसकी कि ही इज लेजी, ही इज दिस एंड दैट. बट he was the only one who was carrying us in our biggest decline. Whether he when we were playing under Emery and Emery के last times, जब Arteta आया, he was very crucial for that FA Cup win by the way. And अगर वो FA Cup हम नहीं जीतते, um, it would have been a huge issue for us. Uh, so I think Oba was one of the best players for Arsenal. He is unfairly, I think, criticized sometimes because of his last season and a half, and the contract he was offered. Joe, uske liye, by the way, he's well within his rights to accept a contract like that. He was that good. But I think he loves Arsenal. I think he has the only problem, like he said in his own words, was the manager. But as the club, I think he loves it. It was London, it was glamorous, it was open, and we accepted him. भाई बंदे ने टैटू करा लिया आर्सेनल का अपने ऊपर. And he's only been here since I think 2016 या 17, मतलब 4-5 साल से ही है था. So yeah, no, I think he was one of the best players that has played for Arsenal. He had, ये वो होता है ना कुछ players की ना personality, he is their biggest asset. जैसे अभी एंटनी का भी देखते हैं, एंटनी कहते हैं लोग शो बोटिंग करते हैं, ये करता है वो करता है. Oba was a personality and he was great. And for a dressing room like ours, जो eventually एक बहुत young dressing room हो गया, we needed a personality. उसकी negative influences थोड़ी I think ज़्यादा होगी, which is criticizable, और आर्टेटा ने उसको फिर रिमूव कर लिया. बट आई हैव नथिंग बट लव फॉर Aubameyang. For Chelsea, he's not been that good, and I hope that continues against the game against Arsenal. Is Koulibaly injured? Yeah, Vipra, I've seen an interview of his, which is given very recently, about how he wants to do something with Chelsea. And I don't think players usually give interviews if they're injured. So I'm assuming he is going to play, or if he's not going to play, he's going to be on the bench. Koulibaly is going to be a huge trouble for Arsenal. Zinchenko, I guess, we've addressed this, how Zinchenko, Rohan would have Zinchenko play against Chelsea. Never knew Zinny was this injury prone. Yeah, man, Ashbin. Um, City fans did know that he was injury prone, but you'd think a player will stay injured for a long period of time. Or if he's constantly injured, वो एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए he might go. But dude, he's played one game a month or two games a month. Hopefully now it'll change. आप कब से आर्सेनल को फॉलो कर रहे हो? आई बीन फॉलोइंग आर्सेनल, मैं आर्सेनल को फॉलो कर रहा हूँ, आई वुड से एक्टिवली सिंस 2001 या 2002. आई थिंक 2005 पे आई वाज फुल फीवर पिच आर्सेनल. आई थिंक जस्ट आफ्टर द इनविंसिबल्स. इनविंसिबल से पहले मैं आर्सेनल को फॉलो करता था, बट आई वाज अ किड यार. आई वाज लाइक 8-9 इयर्स एंड तब मेरा फोकस ऑनेस्टली सिर्फ क्रिकेट पे ही था. um, and I think I missed the Invincible season, and Invincible seasons ke baad wala I think also I missed. So maybe 2006, 5, 6 years, 6, 7 seasons I started following them properly. You know, when we had that young British core, the Fabregas came onto the scene, and for matlab, 2006, 7, 8, I got really got hardcore into football. तब मिलान मेरे को अच्छी लगती थी, बार्सिलोना अच्छी लगती थी. फिर बार्सिलोना ने फैब्रिगास वाला कांड कर लिया. आफ्टर दैट मेरे को कभी बार्सिलोना अच्छी नहीं लगी. So yeah, I started following Arsenal 2000 या 2001, but football मैंने देखना शुरू करा अच्छे से around 2006, 2007. So 15-16 years now. Because he did not play week in and week out for City. I'm guessing this is about Zinchenko. हाँ यार, प्लस सिटी को उतनी जरूरत थी भी नहीं. But again, I don't think we expect to play him week in week out anyways, especially जो हमने अब लेफ्ट बैक पे डेप्थ देख ली है.
सो आई गेस यही है कि वी कैन अफोर्ड टू रेस्ट हिम और प्ले हिम मे बी ट्वाइस अ मंथ और 3 times a month, बट यार जितने हमने पैसे खर्चे हैं उस बंदे पे, जितना हम उसको पे कर रहे हैं, आई होप his injuries become better because like I said he's very crucial. And if we bought Zinchenko as a KT replacement, or as KT was supposed to be Zinchenko का replacement, however you put it, but if KT is KT का replacement फिर क्या point हुआ? So yeah, this is not good. 2018 Jan transfers में आया था ओबा, हाँ right. So he was with Arsenal for I'm guessing 3 years or something, 3 years के आसपास. 2.5 years contract पे आए थे, something ऐसी thing, something was the contract, I remember 2.5 or 3.5. um इस बार वर्ल्ड कप में किससे सपोर्ट कर रहे हो? आई एम अ ब्राजील फैन. आई थिंक I want Messi to win one. I think Argentina ko I'm not supporting because of any other reason except Messi. Otherwise, I think France will win. I don't want England to win at all. फिर वो सारा ना उनके चढ़ जाते सर पे. Oba isn't a good influence and he has passed his prime. Arteta's decision is good. And of course, I think that was one of the most strongest and boldest decisions Arteta has made, and he was criticized for it a lot. Especially जब उसके बाद हम गोल नहीं मार पा रहे थे. किसी को याद है? टॉक स्पोर्ट से लेके एवरी पंडित वाज क्रिटिसाइजिंग Arteta कि oh now you only have Lacazette and you have Eddie Nketiah and he's not ready, and you sold your biggest striker who scores goals, and it is Arteta's responsibility to get the best out of him. Arteta is a dictator. Arteta ने गन मचा ली, उसकी ईगो बहुत बड़ी है, पता नहीं जो भी था. So all of this saying, it was a very strong decision for Arteta to bin off Oba, and उसकी influence, you're right. I don't think उसने लोगों को जाके गंदा इन्फ्लुएंस किया. ही ऑलवेज टुक केयर ऑफ आवर यंग प्लेयर्स. एंड ऐसे लगता है कुछ लोगों को कि यार देखो, अच्छा एक चीज, समटाइम्स बैड प्लेइंग डज नॉट मीन बैड इन्फ्लुएंस, एंड आई नो विवेक परिक डज नॉट मीन दैट, बट like David Luiz को सब criticize करते for Arsenal, but if you listen to any interview by any young Arsenal fan, you'd hear them say how important David Luiz was. Like Martinelli का interview, Saka का interview, Emil का interview, everyone always mentions David Luiz. Oba, I don't think he was a negative influence in the sense he was turning people into like, turning other players into bad players और उनको गलत चीजें सिखा रहा था. But I don't think he was a great role model as a captain. एंड जैसे हम ओडेगार्ड के साथ देखते हैं, ही इज नॉट समबडी हु नीड, यू डोंट नीड समबडी जो वोकल होते हैं, चिल्ला रहे हैं फील्ड पे एंड एवरीथिंग. यू नीड समबडी हु डज द मिनिमम्स टू एब्सोल्यूट परफेक्शन. ट्रेनिंग टाइम पे आना, अपनी अच्छी से ड्यूटीज करना, लीडिंग द प्लेयर्स इन द प्रॉपर वे. आई थिंक ये ओबा नहीं कर पाया. एंड समटाइम्स सम पीपल आर नॉट कट आउट टू बी लीडर्स. सम पीपल मे नॉट, दे डोंट एंजॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मे बी दे डू, बट वो खुद उतना ध्यान नहीं रखते. Zinchenko is getting a lot of flack from fans for his absence, but his passion and attitude is infectious to see. हाँ, उसके celebrations when he's even not playing बहुत important है. मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है देख के. I hope he fixes the situation. I hope so too, bro. Do you think Nicholas Pepe अब आर्सेनल वापस आएगा? अगर वो आर्सेनल वापस आएगा तो वो सिर्फ बिकने के लिए और अपना सामान खरीदने के लिए, वापस लेने के लिए ही वापस आएगा. I don't think he has a future at Arsenal. And like I said in the stream yesterday with Nidhi Bhai also, Pepe is not a bad player, but he is a bad fit for our team. Pepe ने अभी last 6 matches में for, where is he? He's on loan at Nice, I think, right? हाँ. तो Nice पे in the last 6 matches he's scored 4 goals and he's won 2 man of the matches, which is good. Maybe the French league is for him, and maybe eventually he'll go to a top French league. चलो PSG में भी ना जाए, or maybe PSG चले जाए. Maybe Monaco will get them. Maybe he'll play for Marseille or whatever. But he's just not a good fit, so I don't think he's going to come back. Me too, same story. I became an Arsenal fan. That FIFA thing. Yes. I played FIFA 2000 का डेमो, और उसमें आर्सेनल और रियल मैड्रिड थी. मेरे को एक टीम चूज करनी थी, मैंने आर्सेनल करी. उसमें मेरे को कुछ प्लेयर्स देखे, मैंने उनको, फिर वो प्लेयर्स मैंने टीवी पे देखे और मेरे को फेमिलियर लगे, एंड आई जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग आर्सेनल. ऐसे ही होता है यार. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव द सेम स्टोरी. ये जब 2000 था तो आई डिडंट नो कि प्रीमियर लीग कुछ होता है, या फिर प्रीमियर लीग कहाँ देख सकते हो एंड एवरीथिंग.
सो जो लोग एटलीस्ट उस टाइम में बच्चे थे, ऐसे ही कनेक्शंस बनते, बिकॉज यू आर, इफ यू थिंक अबाउट इट, ओके, अगर तुम ब्रॉडली सोचो, ह- हम लोग, जब मैं भी इंडिया में था, हम लोग इंडिया में बैठ के एक लंदन क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको पता भी नहीं हम एग्जिस्ट करते हैं, वी डोंट नो द प्लेयर्स एग्जिस्टेड, द प्लेयर्स डोंट डेफिनेटली डोंट नो वी एग्जिस्ट, द क्लब डजंट नो वी एग्जिस्ट, बट हमने एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लिया है, we start imbibing the values of the club, we start feeling bad when the club loses, we start celebrating when the club wins, and this is over such a huge geographical distance, and it's only either because आपने एक प्लेयर देख लिया, आपने वीडियो गेम में खेल लिया, आपने एक हाईलाइट देख ली, आपके दोस्त फॉलो कर रहे हैं। कितना absurd सी बात है कि आप दूसरे देश में बैठ के एक टीम को सपोर्ट कर रहे हो और आपको इतना इफेक्ट करता है उनका सक्सेस एंड फेलियर, राइट? बट इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड दैट इज़ हाउ इट गोज़। ब्रो, मेक कंटेंट्स ऑन अलग क्लब्स पे, इससे ज़्यादा रीच मिलेगी, क्योंकि आर्सेनल का इंडिया में इतना फैन नहीं है, डेली अपलोड करो वीडियोस यार। हाँ, लकी रेड्स, फ्रॉम अ रीच पॉइंट ऑफ व्यू यू आर परफेक्टली राइट, कि अगर रीच बढ़ानी है तो बाकी क्लब्स बनाओ, फिर बाकी लोग एंगेज करेंगे। एंड यार, रीच बढ़ाने के और भी तरीके, कंट्रोवर्शियल बना दो। मैं कल लिख सकता हूँ इस बार्सिलोना है फेलियर, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज यार आई कैन मेक कंटेंट ऑन आर्सेनल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अभी ये लाइफ के 25 मिनट हुए, आई कैन टॉक अबाउट आर्सेनल फॉर 3 आवर्स। अगर कोई कमेंट में एक क्वेश्चन पूछेगा, किसी ने कुछ डिबेट के लिए कोई पॉइंट बोल दिया, आई कैन गो ऑन एट फॉर 3 आवर्स बिकॉज इट्स आर्सेनल। बाकी क्लब्स ना, मेरे को उतना उसमें इन्वेस्टमेंट है इमोशनल, वो दूर दूर से देखने वाली चीज़ होती है ना, जैसे गलियों की आंटी दूर से देख के कुछ जजमेंट पास कर लेती हैं, मैं वो सब नहीं करना चाहता। तो yes, रीच बढ़ेगी, but I like Arsenal. I love Arsenal, so maybe I'll just follow Arsenal. Ahanaf Islam says, Jan transfer, what inclusions do you want? This is something we will talk about in a bit, Ahanaf. I will come back to your question. I think Arsenal should go for players of the club who got relegated to Europa, as their prices will eventually drop down. Yes, but I don't think they'll be allowed to play for Arsenal, if I'm not mistaken. तो इस January में तो नहीं जाना चाहिए. But let's see. We will talk about transfers in a bit. Elneny back, he should be starting against Zurich. Yes. Sambi, I love Sambi personally. I think uska character is, yes, a little questionable. Not कि वो बंदा बुरा है, but if you followed Arsene Wenger, okay, Arsene Wenger made this very beautiful statement that I still remember to this day. Arsene Wenger said, what's important for a young player is that motivation जो होता है, the intensity of the motivation matters much less than the stamina of the motivation. मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही आपका मोटिवेशन इतना हाई हो गया एक दिन, एंड देन नेक्स्ट डे यू, over time it keeps decreasing. Your motivation should be flat, continuously high over a long period of time. And kabhi kabhi you'll have to deal with the fact that you don't get to play or there are better players. And that's what happens when you're at a big club. Dick Sambi is 21 years old and he doesn't get to play. And I can understand his frustration. But currently, the position we are in, the teams you're fighting against, he's just not stepped up utna. So maybe he'll have to go for a loan. Maybe we'll sell him. I don't know. But yeah, Ashbin, I agree. If El Neni is fit, he should start against Zurich. And we should wrap this Europa League nonsense in the Zurich game, because अगर हमने टॉप नहीं किया, we have to play 2 extra games against the team which drops from the Champions League. So that's not desirable. I still think हम Europa League में will play a strong squad. We'll get to that as well. Do you watch AFTV? Sometimes, bro. I'm not a regular follower. I only watch Robbie के interviews, and that is pretty much it. Hope we Arsenal proved them, these biased English media, wrong how good this team is. हाँ यार, Ashwina, Hanaf, there's this issue with the English media where whenever Arsenal wins, and I know ये बहुत victim mentality कहते हैं काफी लोग, but whenever Arsenal wins, everyone says the other team were poor, the other team did not do well and everything. I hope we show them. It doesn't even have to be a title win. It just has to be that we show them consistently, because everyone is waiting for Arsenal to slip. That draw against Southampton, you should have seen YouTube and you should have seen the media. Is Arsenal cracking? Is Arsenal finally being found out? ये सब बकवास है. Will Zinchenko play against Chelsea? Rohit, I hope so.
he they are saying Zinchenko is back in full training, and like I always say, every time somebody will ask me who should play at left back, whenever Zinchenko is available, play Zinchenko, because you never know when he's not available. Pepe is an ONGC Nice, yes, like I said. If we get a party replace if get a party replacement, a winger and a striker. If you're talking about January, yes, we will be serious title contenders. Good point, Suraj, because last season we dropped the ball for fourth. Spurs did not win fourth, we lost fourth because we did not reinforce better in January. And I see still a lot more comments. तो मैं एक चीज बोल देता हूँ. I'll put a question to you guys, and whoever 5-6 people are here. Do you think? देखो, I'll put a point across you. Man City constantly fights for titles because they are prepared well at the beginning of the season. Man City wins title even though they don't sign anybody in January or hardly make any signings in January. So is it that teams are supposed to be टीम्स को सीजन से पहले ही प्रिपेयर होके आना चाहिए, या फिर जनवरी में रीइंफोर्स करना हर टीम के लिए नेसेसरी है? बिकॉज सिटी बिना जनवरी में साइन करे जीतती है टाइटल्स. तो इज इट कि आर्सेनल इतने सीजन से बस सीजन के स्टार्टिंग में ही तैयार नहीं थी, या फिर जनवरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस? आई होप आप लोग कुछ समझे. जिंचेंको, इफ वी गेट अ पार्टी रिप्लेसमेंट वी विल बी सीरियस टाइटल कंटेंडर्स. 2002 में तो मैं जन्म भी नहीं हुआ था, मैं 2007 को जन्म हुआ था. आई एम 15. ऑलराइट, लकी रेड्स. I started following Arsenal from Jan 2021, um, and my friend was a United fan. He asked me to choose a club, and then I suddenly said Arsenal. ऐसा ही होता है बिपरा. Once you just join a tribe, you just stick to it. I did not had FIFA, but I saw Arsenal winning picks in newspaper in 2004. I clipped the pics and pasted on my notebooks. That's how I came to know about them. Like I said, यार, इन चीजों के अलावा we cannot be fans इन फॉर एनी अदर वे. आपने न्यूज़पेपर में देख लिया, आपने न्यूज़ पे देख लिया. अच्छा, कितने लोगों को लगता था कि आर्सेनल का नाम आर्सेनल इसलिए है क्योंकि उनके मैनेजर का नाम आर्सन वेंगर है? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन आई नो who's an Arsenal fan thought this. Smash the like button, of course. If you're here, smash the like button. I became a fan because of Mesut Ozil. Mesut Ozil कितना dividing figure है ना. When he was at his best and he was playing for Arsenal, he was untouchable. And towards the end, इतनी गंदी तरह से I think उसका end हुआ. मतलब of course मरा नहीं है, but यार पता नहीं क्या हुआ उज़िल को. He was never a player जो full भागेगा, so that was never my problem with him. But I think my problem with him was that he stopped caring. And ये सिर्फ आर्सेनल की बात नहीं, he stopped caring in Turkey also. अभी उसने टर्की में ही साइंड फॉर फेनेrbahce, एंड फेनेrbahce से उसको निकलना पड़ गया. बासिक्सहीर या whoever he signed for, उधर भी apparently is not working out really well. पता नहीं क्या यार. मतलब ओजिल एट मैड्रिड वाज समथिंग एल्स, एंड फर्स्ट 2-3 सीजंस में जो ओजिल आर्सेनल के पास था, दैट वाज समथिंग एल्स. I feel Arsenal is still brittle deep down. I hope they develop into something like Real Madrid mentality monsters in a couple of years. हाँ यार, देखो विवेक, this thing will only happen when we are in situations like we are in now. We might not win the title. I think it's more likely we don't win the title. We might crash out of big competitions. We might. When you suffer failures, is how you become mentality monsters, is the thing. That top four ka loss last season was a huge thing. It'll affect the players negatively and positively. And maybe because of that loss in the last season at top four, we can see what's happening this season. So it's probably good for the fact that you go through these moments जहाँ पे you suffer a little, and then it is what it is. ये हो गया. Sambi is 23 now, and I think he should watch other options. 23, yeah. You know, for the longest time, as at least as long as I was a fan, most players 23 पे अगर solid बनते भी हैं, you can only count them as maybe 20-25 players जो well recognized हैं. Most players eventually start maturing at 26-27, and Sambi is not playing in his natural position. He loves the Xhaka position, by the way. But Xhaka is playing so good. उसकी जगह Emil Smith Rowe भी आ जाएगा. So I don't know if Sambi will get a chance to play or not. But Sambi's position, especially if you watch the preseason games, he was great at that Xhaka wala position. So who knows? Maybe देखो,
एवरीवन वांटेड जाका टू बी सोल्ड, और ये कुछ कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट. बाय द एंड ऑफ लास्ट सीजन आल्सो एवरीवन वाज लाइक वी नीड अ जाका रिप्लेसमेंट, जाका को बेचो एंड एवरीथिंग. एंड नाउ यू सी शाका इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट बिकॉज हमने उसको फ्रीडम दे दिया, उसको उसके एक्चुअल पोजीशन पे खिला रहे हैं. एंड हु नोज, मे बी सैम्बी के साथ भी यही हो यार. ये हम, आई डोंट नो इफ इट्स अ सोशल मीडिया थिंग और इफ इट्स व्हाट, बट वी आर वेरी क्विक टू साइन आउट, मतलब वी वेरी क्विक टू राइट ऑफ प्लेयर्स एंड वी वेरी क्विक टू हाइप अप प्लेयर्स. एडी एनकेटिया को पहले हमने इतना राइट ऑफ किया, फिर अब उसको हाइप किया, फिर राइट ऑफ कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा. आई रिमेंबर अभी एमील स्मिथ रो के अगेंस्ट इतना ज़्यादा राइटिंग ऑफ हो गया है. पीपल डोंट रियलाइज व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही इज. तो यार ये सब होता रहता है, बट आई थिंक सैम्बी मे बी इफ ही इज गिवन अ चांस इन हिज नेचुरल पोजीशन ही विल डू वेल. आई डोंट नो. गैक्पो और येरेमी पीनो, आई एम गेसिंग येरेमी पीनो की बात कर रहे हो आप, और पेड्रो नेटो और मिकोलेंको. यार पेड्रो नेटो की ना वो इंजरी बहुत गंदी हो गई थी. आई थिंक क्या उसका अकीलीज गया या एसीएल गया है, इन दोनों में से कुछ गया है. मिकोलेंको के लिए तो यार वो कह रहे हैं दे गोइंग टू चार्ज 100 million, जैसे यूनाइटेड ने एंटनी के लिए पे किया था. गाकपो आई थिंक वो टेनहाग से सेड्यूस होके यूनाइटेड चले जाएगा. येरेमी पिनो, if we've seen him and Arteta doesn't like, if Arteta liked him, I think we'd already have him. But you're right, we need a winger. सिर्फ एक defensive midfielder काफी नहीं है. As a Chelsea fan, I like your content. Thank you so much, Summer. As an Arsenal fan, you are the only Chelsea fan I like. Bro, आप कभी Emirates Stadium गए हो? Bro, मैं within the next few months I will be at the Emirates, I can promise you. I am in Dublin right now, which is in Ireland. I am 30 minutes away by flight from London. और जिस दिन मेरे हाथ टिकट लग गया, मेरे हाथ वीज़ा लग गया यूके का, मैं तो पहुंच जाऊंगा. Even till now, I feel Arsene Wenger and Arsenal was a match made in heaven. भाई, talk about a man who was made to run a club. मतलब वो ना full grandfather godfather वाली feeling आती है आर्सन वेंगर से. He ran the club as a manager, as an executive, as an economist. मतलब अब सब देख रहे हैं कि स्टेडियम बिल्ड करना आसान नहीं है, अपनी फैसिलिटीज अपग्रेड करना आसान नहीं है. ईदर यू चूज सक्सेस एंड मनी और यू चूज टू अपग्रेड योर स्टेडियम कंटिन्यूसली. किसने अभी तक प्रीमियर लीग में रिसेंटली, अभी अब जैसे लेस्टर इज अपग्रेडिंग देयर फैसिलिटीज, नो ट्रांसफर्स दिस सीजन. स्पर्स का नया स्टेडियम बना है, दे हैव अ लॉट ऑफ डेट एंड इवन दो दे स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, इट्स बिकॉज उनका स्टेडियम इज ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ रेवेन्यू and they have good quality players. But Spurs भी I don't think उतना अच्छा खेल रही है. And even if they have to sign, वो देखना, it will eventually catch up to Spurs. They can't spend unlimited money and have also pay out the stadium debt. United, Old Trafford की हालत खराब हो गई है. And I don't mean as a ground. I mean, I don't mean as a uh, team ka fortress and everything. As a ground, its infrastructure is crumbling. They haven't renewed or renovated Old Trafford in such a long time. So it shows what a great job Arsene did for Arsenal in all those years. Yes, also Man City was Man City because of Mancini. Oh yeah, Mancini, Mancini, Man City. Yeah, is Fabregas an Arsenal legend? 100%, 120%. He loves, I know Summer, he loves Chelsea as well. He loves, I think he also likes Barcelona because he was brought up in La Masia. But I think any Arsenal fan who doesn't consider Cesc a legend has not either watched him properly or is still bitter, which I understand. I was also pissed off at Cesc when he left for Barca, and I was pissed off when he was going to Chelsea. But Chelsea wala to situation was because Wenger didn't want another midfielder. काफी strange, but I would always love Cesc. He was साका से पहले रीस नेल्सन वाज द ओरिजिनल वंडर किड, उससे पहले Wilshire and then Cesc. Cesc was one of the best kids who came up through our academy, La Masia, and then we signed. Me, I don't know, bro. क्या बोल रहे थे? I'm so sorry. इतने सारे comments में सारा भूल गया मैं. Um, I still wish the Leicester season if he had a better striker. यार अगर जिरू ही कर लेता ना चीजें, देखो Giroud is not a bad striker, but I don't know what happened to him that season. Assist Ozil would have been assist king for sure. I sometimes regret why I was not old enough to watch Bergkamp. Yeah, bro.
I know most of Arsenal fans have Henry, but my favorite football player is Ronaldo, Messi, Beckham, and that is fine. Every generation will have their own. Some people will go to Tony Adams in his prime. Some people think, what's that guy's name? George Graham is the greatest Arsenal manager of all time. Some people think Arsene Wenger. Some people have been born after Arsene Wenger. Um, लो- के जो बेस्ट ईयर्स थे उसके बाद सम पीपल हैव ओनली सीन द बैड आर्सन वेंगर, दे हैव नॉट सीन द गुड आर्सन वेंगर. तो यार ये सब चीजें होती रहती हैं. ऑफ कोर्स एवरीवन विशेस कि हम आर्सेनल को उनके बेस्ट पे देख के खेलते खुश होते हैं एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक द बेस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू कम. आर्सेनल विल ऑलवेज बी एट द टॉप इवेंचुअली. हमारी डेस्टिनी भी, डेस्टिनी की बात नहीं है, हमारा क्लब ही ऐसा है. वी आर यूज्ड टू सक्सेस एंड इवन दो वी माइट बी इन अ लॉन्ग रीबिल्डिंग प्रोसेस, वी विल गेट देयर अगेन. डू यू वॉच डॉक्यूमेंट्री ऑन Amazon प्राइम? जिस दिन एपिसोड आता था उसके पहले 10 मिनट में मैं देख लेता था. I am so happy seeing an Arsenal based channel. Please do continue sharing your content. Of course, Abna Ahanaf. Um, if I don't know if I'm saying your name right, but of course, thank you for your support. Please like the video. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर दो. एंड नेक्स्ट टाइम लाइव जाने के लिए समटाइम्स आई माइट नॉट बी एबल टू मेक अ कम्युनिटी पोस्ट, तो आप एक नोटिफिकेशन बेल को कर दो. व्हाट अबाउट आर्टेटा लिंक टू बारसा? आई थिंक आर्टेटा लाइक पेप इज अ मैनेजर जो बिना प्रोजेक्ट को खत्म करे कहीं जाएगा नहीं. एवरी प्लेस पेप हैज बिन, वो चैंपियंस लीग जीत के गया है. And I don't think he is going to leave City before he wins the Champions League. Same with Arteta. He will see this process through. The only team I think Arteta will go leave Arsenal for is Man City. But again, Arteta is a man of integrity. He is not going to leave a club जब उसने इतना लंबा process start करा. He is also a responsible man. काफी पैसे खर्च करवाए हैं, and I don't think he'll also think it's fair to leave Arsenal in the middle of a project. Prime Ozil is greater than Prime KDB. Very interesting statement. As an Arsenal fan, I will agree, but I don't think a football neutral will agree with this. RVP, legend again. लोगों को उसका मैन यूनाइटेड वाला लगता है एंड ही लेफ्ट इन अ वेरी टेरेबल वे. आई डोंट नो एक्चुअली, यू नो व्हाट, आरवीपी इज नॉट अ लेजेंड. लेजेंड स्टेटस हम किस किस को दे रहे हैं? आई थिंक ऑनरी को, बर्गकैम्प को, इयन राइट को, सेस्क को भी दे रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट थिंक आरवीपी इज अ, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स वी एवर हैड, बट आई डोंट थिंक ही विल बी अ लेजेंड. ओल्ड ट्रैफर्ड की हालत तो यार बहुत ही खराब है जनरली. फैब्रिगास इज आर्सेनल लेजेंड ऑफ कोर्स. जो भी सर एलेक्स पे पिज्जा फेंकेगा वो आप बाप आदमी है. सही बात है भाई. इफ यू नो यू नो. पिज्जा गेट अगर किसी को नहीं पता, चेकआउट प्रीमियर लीग पिज्जा गेट एंड आपको सब गॉसिप मिलेगा. सेस्क ने एटलीस्ट एडमिट भी किया था आई थिंक एक टीवी शो पे. लास्ट कपल ऑफ कमेंट्स एंड देन वी विल गो to the next part, which is transfers. I think Arsene Wenger had the capability to win at least two UCL for us in his Arsenal tenure if he got the backing from the owners like nowadays. Man, he could have signed more world class players for us. Hi, Bipra, that's true. But it's just that the economics of it did not make sense. We had a Emirates के साथ जो deal था was severely undervalued. Like our deal ran through the time when Premier League's exposure became so high that we should have had a better deal incoming. But we were getting so little money कि हम उसको ज़्यादा spend नहीं कर पाते थे. And whatever money we were getting, we only, most of it was going through loan and interest payments. So it's pretty much impossible for us to sign players. And think about the fact that despite all of that, we were in UCL for every year along those years. And until फाइनेंशियल डोपिंग जिसको कहते हैं, बहुत ऑयल मनी जब तक नहीं आ गया प्रीमियर लीग में, तब तक वी वर कंसिस्टेंटली इन टॉप फोर, ऑलवेज इन टॉप फोर फॉर 16 years स्ट्रेट. दैट्स ह्यूज कंसिडरिंग हम जितना पैसा हमारे क्लब से निकल रहा था. डू यू वॉच इंडियन फुटबॉल? इंटरेस्टिंग थिंग प्रतीक, आई डोंट वॉच इट एनी मोर, बट आई डोंट रिमेंबर वॉट सीजन इट वॉज. आई हैव कवर्ड इंडियन फुटबॉल एज अ जर्नलिस्ट. मैं goal.com के लिए लिखता था. गोल इंडिया जो उनका इंडिया ऑफिस था, आई यूज टू राइट फॉर देम. एंड आई यूज टू कवर द ISL. एंड मैंने ISL तब कवर करा था व्हेन Gianluca Zambrotta वाज द दिल्ली का मैनेजर. अब तो खैर दिल्ली की टीम भी नहीं है. एंड आई हैवंट फॉलोड इंडियन फुटबॉल फॉर अ व्हाइल, बट ISL आई थिंक जब से उनका मर्जर हुआ, आई थिंक इट्स गॉटन लिटिल बेटर. बट मेरे टाइम पे stadium used to be empty for most matches. The only time it used to be full when Northeast United used to come to Delhi and play. So yeah, I've actually covered Indian football as a journalist.
एडी हैव टू प्रूव दैट नंबर 14 ही हैज आस्क्ड फॉर. हाँ यार, एडी का भी यही सीन होगा. ही इज टू यंग एंड समटाइम्स यंग प्लेयर्स नीड लिटिल टाइम. तो बस देखते हैं. चेल्सी से जीतना चाहिए 100%. आर्सेनल हिंदी भाई, चेल्सी से तो जीतना पड़ेगा बिकॉज चेल्सी का राइट साइड इतना वीक है. एस्प्लिक्वेटा हो, स्टर्लिंग हो, या फिर लॉफ्टस चीक हो, मार्टिनेली विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट लेफ्ट साइड अगेन, हमारा लेफ्ट साइड बहुत क्रूशियल होने वाला है. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. उसका भी एक प्रीव्यू बनाएंगे अच्छे से. शुड एटलेटिको मैड्रिड सैक चोलो? यार, मैं रिसेंटली सोचने लग गया हूँ कि कभी कभी ना, आफ्टर अ फ्यू इयर्स क्लब शुड नॉट रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजर्स. बिकॉज एक लेवल के आगे आप नहीं ले जा सकते हो. चोलो ने एटलेटिको को रेलेवेंट बनाया है. And he's won them a title. He's made them play in finals. And if you've not watched one MUFC के वीडियो, उसने भी इसी बात पे बोला था कि यार, it's not about the results. You're not getting the results, of course, but you're also not getting the best out of your players. Jao Felix है, Correa है, Rodrigo de Paul है. You have great players in every position on the pitch. You're still not getting the best out of them. And अब आप यूरोप में नहीं हो. आपकी ला लीगा की क्या हालत है? Can you still retain to be the third best team on a consistent basis, and is that good enough? He's the highest paid manager in the world, by the way. So I don't know. It honestly depends on what Atletico Madrid के plans are. I अभी तो मैंने खैर एल चिरिंगीटो का देखा था कि they're contacting Luis Enrique, but I honestly don't think Atletico will get rid of Cholo. I think he's one of the most, as a personality, is one of the most important people at Atletico. Okay, Saurav, Ashbin, Vivek, I will move on to transfers because this question answer session has gone on for a little longer than I would have liked. Okay, let me make a new banner really quickly and ask you, what positions do we need players for? अपने अपने positions लिख दो जल्दी से. फ्रॉम गोलकीपर से लेके स्ट्राइकर, जो भी आपको लग रहा है, चाहे फर्स्ट टीम प्लेयर हो, चाहे एक बैकअप हो. Just write, we need, let's say, a left wing backup for Martinelli or a right wing backup for Saka. And who would you have Arsenal get? What positions? Okay, guys. Chalo. Is it showing now? No, it'll show now. Yes. Okay, it Atletico Madrid की बात हो गई है. Right. Ashwin says, imagine if he has signed Lisandro. Yeah, Lisandro will not come here. Italian players, Italian league में जो खेलते हैं ना, बहुत rarely Premier League में आते हैं वो. Oh, Lisandro Martinez. मैं लोटारो मार्टिनेज सोच रहा था. Lisandro Martinez and Saliba की partnership at CB would have been grand. If we had that, we would have the best backline in the league. Wake transfer talk. Yes, we are here. Odisha FC. Oh, you like Odisha FC? मैंने ओडिशा का कोई मैच देखा था, मेरे को याद नहीं यार. लकी दैट, सॉरी. ओके, आर्सेनल हिंदी, गूनर फॉर लाइफ एंड सूरज, यू ऑल से सीडीएम्स. कौन सा सीडीएम? हु डू यू थिंक वी गेट? सौरभ शर्मा, एंजो फर्नांडिस. गुड प्लेयर, गुड शॉट आउट. वन सीएम, वन सीडीएम, बैकअप स्ट्राइकर. हाँ, बट कौन? वी नो सीडीएम इज द मोस्ट ऑब्वियस पोजीशन वी नीड टू गेट फॉर. बट सीडीएम के लिए है कौन? देखो, डगलस लुइस को हमने चेस किया था, बट डगलस लुइस ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, सो दैट ऑप्शन इज गॉन. प्रीमियर लीग सीडीएम कोई है ऐसा जो हम ले सकते हैं? बिकॉज आई थिंक आउट ऑफ द लीग कोई अगर हम सीडीएम लें तो काफी बड़ा रिस्क होगा. जैसे सैम्बी को हमने पार्टी के लिए ही लिया था, बट सैम्बी इज नॉट गोइंग. एंड सैम्बी की एक्चुअल पोजीशन अब जाका वाली पोजीशन निकल चुकी है, सो आई डोंट नो. CDM. Partey backup. I know level will drop, but still got to find a nice backup, and a Saka backup. Enzo Fernandez is a good shout. CDM backup. We need a flexible
Winger who can play both right wing, left wing. Funny you should say that Gunnar for life. That is what exactly Fabio Vieira is. Number 10, right wing and left wing. But he needs to bulk up a little and he needs to get used to the physicality of the league. Harry Maguire le lo, bhai. You will have to pay us and then give us Harry Maguire. We will not pay for Harry Maguire. CB. And even if you pay for Harry Maguire, I still feel we will get cheated. यूरी टीलेमेंस यस टीलेमेंस इज बहुत इंटरेस्टिंग है यार इफ किसी ने अगर लेस्टर गेम्स देखी है ना टीलेमेंस बड़ा हॉट एंड कोल्ड प्लेयर है एंड मैंने उसको कभी सीडीएम एज अ होल्डिंग प्लेयर देखा नहीं वो हमेशा बॉक्स के एज तक आते बट अब पार्टे भी आ रहा है पहले मुझे लगता था यूरी इज नॉट अ गुड फिट फॉर अस बट नाउ जितना हम एडवांस देख रहे हैं पार्टे को जैसे नॉटिंगम फॉरेस्ट के अगेंस्ट देखा था वो देख रहे हैं अब Yuri की सबसे बस biggest thing which I'm very confused about is can Yuri Tillemans do the same defensive work that Partey does? देखो balls आगे तो Sambi भी खेल लेता but Sambi cannot break up transition plays like Partey can. तो can we do that? Caicedo बहुत competition होगा for Caicedo. I think United will be looking at him. No, I don't think United. अब तो Casemiro आ गया and they're not going to look for him. It's going to be Liverpool and Arsenal if we go for Caicedo, but I don't think we'll go for Caicedo. But he's going to be a good player. Bissouma I wanted to get, but Spurs got Bissouma, and of course uske case ke saath it was very difficult. Rice, Declan Rice would be my dream signing. I know he's not a good fit for us. He's not going to be a good fit for us. वो थोड़ा पोजेशन टीम के लिए है नहीं एटलीस्ट मेरे को तो नहीं लगता आई डोंट नो मेरे को क्या पता फुटबॉल के बारे में मैं तो एक रैंडम लड़का हूँ who's just sitting in another city but Declan Rice यार if you get Declan Rice he'd be my ideal signing to get Yuri Tillemans again वही बस मुझे उसके defensive issues ही हैं we should try for Miguel Marino of Sociedad is a good save Miguel Marino भी बहुत अच्छा option है देखते हैं यार मिगेल मेरिनो भी अच्छा है एंजो फर्नांडिस भी अच्छा है लोकाटेली भाई यूवे से जो खुंदस मचती है ना मुझे because of how they steal away every Italian prospect. Not the player doesn't even have to be Italian. उसने सीरिया प्लेयर ने सीरिया में खेला है बस जुवेंटस ने विस्पर भी कर दिया वो प्लेयर यूवेंटस चला गया सो आई डोंट लोकाटेली इज नॉट गोइंग टू लीव बरेला किसी ने सोचा है बरेला Barella is going to be huge as well. My favorite pick, ideal. हम रियलिस्टिक की बात नहीं करें अगर हम आइडियल सोचें तो बरेला मेरे लिए तो बरेला है लोकाटेली इज ऑल्सो गुड शॉट रूबेन नेवेस oh by the way Barella is not like a full CDM but he's a good CM रूबेन नेवेस हाँ यार बट स्लो बहुत है और फिर इट्स लाइक शाका को हटा के उस सीडीएम पोजीशन से हम शाका जैसा ही स्लो प्लेयर ला रहे हैं जो मे बी प्रेस रेजिस्टेंट उतना नहीं हो सो मे बी रूबेन नेवेस इज नॉट द बेस्ट प्लेयर बिकॉज ऑफ हिज lack of press resistance. Partey is very press resistant. Enzo can play in multiple positions in midfield. Yes, you're right. Enzo, that is why I said Enzo Fernandez is a very good shout. It's just a question of can he make the move and fit there? Arey yaar, there is also this player, no, that Chelsea is looking from Ajax, that CDM, who was almost coming to Chelsea. I forgot his name. He's also a good option. Gutierrez tha. I don't know. He's a Mexican. Uh, this is Saurav is probably laughing about my Maguire comment. I think Caicedo is a good option. We missed Bissouma in summer, but we need to go for Caicedo. I think, bro, if we finish top two, I 100% expect the owners to give us another 100 million because they've seen what a little cash injection can do. Maybe a lot more cash will probably get us the player we need. Arsenal is shit. Thank you, Forever United. But I think Yuri is box to box. That is the only thing here. Yuri is more box to box. He's hardly a CDM, but he plays CDM as well sometimes. Uska defensive is this. Box to box, perfect for Arteta. Who else do we play box to box? Yeah. Xhaka is the only box to box we have. So you want Yuri as a backup to Xhaka? Okay, I think Sambi would be a good backup to Xhaka. I think Emil will play. जब Xhaka नहीं खेल पाएगा, Emil will be the one who's going to take over that position. João Felix to Man United.
whichever team gets Joao Felix, whenever he's free from Atletico now, I think Joao Felix is going to explode. At one point, I was convinced when he was playing for Benfica that he is going to be in the top three players. And who knows, man? Maybe when if he signs for a really big team like United or maybe Chelsea or even Arsenal for that matter. Imagine if he comes to Arsenal. He'll start coming into that conversation for Haaland and Mbappe. And I know काफी बड़ा take है, but Joao Felix is that talented, यार, and he's very very young. Wilfred Ndidi, good shout. Leicester. If Leicester's troubles continue, if managers keep getting sacked, if Arsenal really want to go for somebody, I think closest to Partey will be NDD, but he's more defensive and less offensive. So again, I think it's all about कि हम where do we make that compromise? Do we make a more offensive sort of box to box player like Yuri and get somebody who's not that good at defensive sides, or do we go for a Wilfred Ndidi who's better defensively but sort of sucks offensively? And which is why ये सब हम बोल रहे हैं, इससे दिखता है कि पार्टी कितना इंपॉर्टेंट है. Ideal signing will be Frankie de Jong. Yes, but अब भूल जाते हैं उसको. Have you seen Lobotka plays for Napoli? Yes, but I think Napoli के सारे players are committed to that project. So it is like taking जो आर्सेनल का कोई प्लेयर जो अभी प्रोजेक्ट से कमिटेड हो, somebody trying to take them away. I think सारे Napoli players are committed to that project, whatever's happening there. He was brilliant against Liverpool. Sorry सूरज, context भूल गया मैं. यूवे डज व्हाट बायर्न डज इन बंडेसलीगा. भाई यूवे का तो नाम ही मतलब, मुझे गुस्सा आ जाता है. वाशकेलिया को लेके आओ, हाँ ब्रो. Ideally, yes, but like I said, every Napoli player is untouchable right now for me. Let's hope Edu has found out some Brazilian CDM which is not hyped up much. They're saying this guy, Danilo? Danilo, right? Who plays for Palmeiras. He's the one who's somebody that we're looking for. Barca is also going for Ruben Neves. Yeah, that's the thing. If we come competing with the player with Barca, that player will always choose Barca because Barcelona ka pull is huge. I said it in the stream with Nidhi Bhai also yesterday. Some teams की लेगेसी इज इतनी बड़ी कि वो प्लेयर्स का नाम सोचते हैं. दे से कि वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्लेयर, दैट प्लेयर फॉरगेट्स एवरीथिंग. नो लॉयल्टी, नो मनी, आई डोंट केयर, मेरे को तो बार्सिलोना के लिए खेलना है. बिकॉज यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट लेगेसी. कॉन्टे टू इंजर्ड मैन. फ्रैंक कैसी है? He's committed to Barca. I don't believe he's leaving Barca. He's left Milan, a young upcoming team, मतलब who's returning to glory. Milan जैसी legacy को you've traded off for Barcelona legacy, where you're not a guaranteed starter, where you're definitely foregoing either some wages or you're taking your payment later. Despite that, if you've made so many sacrifices to go to Barcelona, I don't think you come to Arsenal. Alvarez, I think Ed क्या नाम था उसका, not Edson Alvarez, but yes, that Mexican player is Alvarez. सही बोल रहे सौरभ. Edson Alvarez, yes. Mexican Alvarez, yes. Bring back Santi Cazorla. Oh man, I'm so sad Santi did not get a farewell match for himself. Hopefully, one day we can correct that mistake. Charlie Patino will be coming back next season for box office. Do you guys think Patino and Balogun, do you think they're good enough to play for Arsenal now, or do they require another loan? Personally, for me, I think they require one more loan. But if they've done really well, like Patino is doing really well, Balogun is doing really well. But if you get Balogun back, what is he? Third choice striker? And we already have so many good strikers. Yeah, I think, and like I said yesterday also, I will make a video on this. We will have to start selling some high potential players. And her team करती है यार. Have you not seen Chelsea? They sold off Salah, they sold off De Bruyne, they sold off Robin also. चलो Robin is a different case. But still, मतलब इतने high potential players को Chelsea have sold. I think we'll also have to sell. I won't be surprised if we end up selling Balogun for like 15 million. And some other players. I think one of Emil Smith Rowe, one of Martinelli, and one of Saka will be sold in the next 3 years. 100%. क्योंकि आप उन लोगों को ऑलरेडी इतना पैसा दे रहे हो. देखो, if you're paying these kids at 22, 23, around 200k, 250k,
चलो आपने एक और कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया उनको 25-26 तक, यू पेइंग देम 400K ऑल्सो, उसके ऊपर कितना जाओगे तुम? At some level we'll have to sell these players, not because one, it's financially good for us कि आपने प्लेयर को डेवलप करके करा, बट we can't hold on to every good player. If we get Balogun back, we have so many good strikers in the academy. John Jules को बेचना पड़ जाएगा. We have Mika Bireth who is apparently really good. है ना? तो यार एकेडमी भी हमारी बहुत अच्छी है. So either we'll have to start selling off players from the academy or players like Balogun जो लोन में अच्छा कर रहे हैं. Um, who else? Yes. Do you think Zaha will renew? Very difficult to say, man. Zaha ka yaar, it's as much as I love Zaha and he would have been ideal over Pepe in hindsight. Zaha at big clubs is always a huge gamble, by the way. Crystal Palace pe he plays without any pressure. Crystal Palace pe he's playing without any spotlight. He is the main man, and if he doesn't perform, then sabko lagta hai, chalo it's just Crystal Palace. Who cares? What if Smith comes back and replaces Gabriel Martinelli? Santosh, I think if Emil Smith Rowe comes back, he's gonna play in the Xhaka position because he runs the channels faster and better than Xhaka. He has more control than Xhaka. He has better passing than. चलो passing में department में थोड़ा सा आप debate कर सकते हो, but he's definitely faster and he's a better finisher than Xhaka. Even though this Xhaka ka form has been phenomenal. Um, so I don't think he'll replace Martinelli, which means I think we'll have to go for a left winger. He can play left wing as well, but I won't be surprised if he plays Ojaka wala number 8 position along Odegaard. दो प्ले मेकर ओडेगार्ड एंड एमिल स्मिथ रो जैसे अगर हो जाएंगे तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. So yeah, one thing is clear: Arteta will not sign any player above 30. That is not true, man. I think depends on the need, to be honest. कभी कभी यू नीड लीडर्स, कभी कभी यू नीड एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर. हमने डेविड लुइस साइन किया, हमने विलियन साइन किया, एंड समटाइम्स इट डजंट वर्क आउट क्योंकि we signed those players for experience. But hoga, but you're right about the fact that we can't take many risks in the market. देखो अभी यूनाइटेड आर गोइंग ऑन अ प्रोसेस, राइट? यूनाइटेड हैव अ टेन हाग in charge of their process, just like we have Arteta in charge of our process. But the difference is that United can make a few flop signings and they will continue like nothing has happened. And we can also do it to an extent. But United can do it at a greater scale. So, for example, Abhi United have signed Casemiro, Anthony, Malacia. Um, let's say they get another couple of players in January. Gakpo ले लिया उन्होंने, कोई और ले लिया. ठीक है? They spend 200 million. Abhi, by the way, United have spent as much money, if not a little more than City in the same time period. And you see where City is and you see where United is. So, I don't know, man. Matlab, United can spend money, have a few flop signings, turn on them, and as much as United fans like to say कि सिटी के फाइनेंशियल डोपिंग है, सिटी की बहुत फाइनेंशियल डोपिंग है, उनको कंट्री सपोर्ट करती है. आई थिंक यूनाइटेड का रेवेन्यू इतना ज़्यादा है कि दे कैन अफोर्ड टू मेक अ फ्यू मिस साइनिंग्स. वी कैनॉट मेक अ पेपे लाइक साइनिंग एवर अगेन. आई कैन टेल यू दिस मच. हम 50 मिलियन का कोई भी 24-25 year old कभी नहीं लेने वाले बिकॉज ऑफ दैट पेपे एक्सपीरियंस, नॉट एटलीस्ट फॉर अनदर फ्यू ईयर्स. United have spent whatever money they spent for Anthony. This is after they spend the money for Sancho. And if Anthony doesn't work out or if Sancho falls out of order, they will spend another 100 something million or 90 million on another winger. And they can do it because they have the money to do it. The problem for United is the owners. Owners उनके इतने clueless हैं कि वो पैसे शायद से दे ही नहीं. तो पता नहीं क्या होगा. But the difference between Arsenal's process and United's process is that United can have a lot more mistakes than Arsenal can have. Liverpool cannot have those same mistakes when they rebuild. Tottenham also cannot have those same mistakes, even because Tottenham का तो stupidity यही है कि they never stick with the manager. Either they go into panic or whatever happens. I'm telling you, if they manage to keep Conte for 3 years, Spurs will also become a very good team. Okay, few more questions and then we move from the CDM position and we see कि आगे क्या होता है. Eddie Sell Balogun in. Yeah, this is all again
I don't. People don't realize Balogun was really bad for Arsenal as well. He's a very hyped up prospect. I think usko bet. I think Balogun का time आ गया है. Who knows? I don't know. We're also linked with Ndika of Frankfurt. यार, he is also very fast centre back. But अब क्या हमें centre back की जरूरत है? Gabriel, Saliba, Ben White, Tomiyasu, Rob Holding. Five players who can play centre back right now and rotate. I don't know, man. I don't think so. I don't think centre back is going to be a priority for a while. And these guys are young. ऐसा भी नहीं है कि कोई एक सोक्राटिस है, एक दाविड लुइस है. These guys are young and these will stay for at least 5 6 years. Which team are you going to support in the World Cup? Just because of Messi, Argentina, otherwise France. Hi Daksh Bhaiya, Arsenal fan here. If ESR comes in the midfield will be ESR Partey Odegaard. Exactly what I said, Shauryadeep. Very good. Um, Messi ki photo, you must be a Messi fan as well. But yes, I think ESR will play instead of Shaka. Shaka को हम slowly phase out करेंगे जैसे हम slowly Partey को भी phase out करना शुरू कर देंगे. Next season, I think this season and next season is going to be Partey's most important season. I don't think beyond this season. I think इस season we might sign a defensive midfielder. But next season तो definitely कर देंगे. अगर इस season नहीं किया. Can't play ESR Partey and Odegaard together in midfield. I don't know, man. If Partey and Odegaard, so anyways, are playing in current midfield. Xhaka is good coming back, but ESR, yeah, ESR is young. You can make him play any way you want, and he's bulking up also. अभी चलो अपनी सर्जरी के बाद थोड़ा मोटा हो गया, but ESR can play. I think he can play. I don't know. I mean, you and I can disagree, Gune for life. हमारे ओनर्स पैसे नहीं देते. आई एम गेसिंग यू आर अ यूनाइटेड फैन नीरज. हाँ यार, जब तक आग नहीं लगती घर पे तुम्हारे ओनर्स पैसे नहीं निकालते, बट जब निकालते तो छप्पड़ फाड़ के निकालते हैं. एंड लाइक आई सेड, यूनाइटेड के ओनर्स की प्रॉब्लम है, बट दे स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज सिटी इन द सेम टाइम. I think in January, and by the way, this is why I bring up City, because City can make 50 million signings in every window for the same position, and it doesn't really matter to them. I think in January we should go for a striker or a backup for Saka. Backup for Saka is very important. तुम लोगों ने इंजरी का देखा है उसका? Looks like he's back in full training, but he's going to get targeted. And Arsenal fans को PTSD हो चुका है, जैक विल्चर वाला. If our player gets injured a lot, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. सॉरी शौर्य. You should go for Locatelli if possible. Juve का पुल है, कभी मिलेगा नहीं हमें. If we get him, then instant title challenge. This was going to be my last question कि अगर हमें टाइटल चैलेंज इस सीजन नहीं नेक्स्ट सीजन करना है तो हमें क्या जरूरत है. एंड ऑफ कोर्स साइनिंग्स की तो बात है, बट व्हाट एज अ टीम कैन वी इम्प्रूव, ये मैं अभी डालूंगा उसके बाद. काफी क्वेश्चंस आ गए. चलो आई पुट इट इन द बैनर अभी ही. ऑलराइट, एंड यू गाइस अपने अपने ऑफ कोर्स थॉट्स वगैरह डाल दो. इफ वी हैव टू चैलेंज फॉर द टाइटल विद इन द नेक्स्ट 3 सीजन्स, ट्रांसफर्स के अलावा, चलो ट्रांसफर्स तो डाल ही दो, बट उसके अलावा व्हाट डू वी नीड टू फोकस ऑन एज अ टीम, हमें क्या इम्प्रूव करना है. व्हाट डू वी नीड टू माउंट ए टाइटल चैलेंज इन द नेक्स्ट 3 years. बिकॉज देखो भाई लोग, बोलना आसान है कि हम टाइटल चैलेंज करेंगे, हम ये करेंगे. लिवरपूल जितना फ्लॉलेसली खेली है लास्ट के कुछ सीजन्स में, डिस्पाइट दैट दे हैव ओनली वन टाइटल टू देयर नेम. तो हमें लिवरपूल को सरपास करना है एंड देन सिटी को सरपास करना है. एंड ऑफ कोर्स ऐसे सीजन्स में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लक, बट व्हाट डू वी डू एज अ टीम, हमें क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा. एंड देन आई विल गिव यू माय आंसर. आई थिंक इन जनवरी we should go for a striker. Yes, sure, we've covered this. United can rebuild faster because of the balance they usually have. Yeah, they have so many sponsorships. They're a brilliant brand. They're a brilliantly run business. They're a terribly run football club. और क्या है? शौर्यदीप, don't spam. हाँ ठीक है. Top 3 CBs in the Premier League for me. Thiago Silva, Van Dijk. करंट फॉर्म को हटा के इन जनरल ओवरऑल, हाँ, थियागो सिल्वा, वैन डाइक, सलीबा.
एंड देन उसके बाद आई वुड पुट गैब्रियल। और कौन है सिटी का? आई थिंक रूबन डियाज इज ऑल्सो रियली गुड मैन। हम क्या सोच रहे? रूबन डियाज इज रियली गुड, बट आई डोंट थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग। या CDM एल्डअप लेफ्ट विंग बैकअप इज एक्चुअली व्हाट वी नीड। लेफ्ट विंग, हमें एक वर्सेटाइल विंगर चाहिए, जो किसी ने बोला था, somebody who can play on the left and the right. CDM तो अब काफी ऑब्वियस है, नो सेंटर बैक। या ऑस्टिन ट्रस्टी है फ्यूचर एट आर्सेनल और नॉट? ऑस्टिन ट्रस्टी मुझे लगता है ये थोड़ी ना मनी लॉन्ड्रिंग वाली साइनिंग होगी हमारी, बिकॉज हम MLS से काफी प्लेयर्स के साथ लिंक हो गए सडनली, राइट? ऑस्टिन ट्रस्टी, मैट टर्नर, फकुंडो टोरेस। आई डोंट नो इफ दिस इज एन ओनर्स का थिंग, बिकॉज हमारे ओनर्स कोलोराडो की आई थिंक टीम को ओन करते हैं। Don't you think KT is better at LB than Tomiyasu and Zinchenko? Is Ben White a better right back to compete for the Premier League title? Nobody expected Ben White to be this good. I certainly did not expect it. And the fact that he's turned out so good is magical for us, because now we have another person who can play right back. Is he a Premier League winning right back? I can tell you there have been worse right backs that have won the Premier League, so I don't think there's an issue with Ben White ka quality. Kieran Tierney better at left back. There was a very smart man in the comments. I forget your name, sir. Rohan Jadhav. He has already said it'll depend on who the opposition is. जैसे रोहन ने कहा कि अगर हमारे पास ज़्यादा बॉल होगी, जिनचेंको इज बेटर। अगर हमें डिफेंस में करना है, देन केटी और टॉमियासु बेस्ड ऑन द ऑपोजिशन। बट is he better than, as a left back? He's definitely better than both for me personally. You people can disagree, of course. Will Southgate select Rashford in FIFA World Cup? Nobody knows. Yeah, I don't follow the English national team उतना ज़्यादा। I mean, of course उसकी न्यूज़ तो escape करना impossible है, बट साउथगेट के फेवरेट्स हैं यार, एंड साउथगेट को जितना क्रिटिसिज्म मिलता है ना, आई थिंक ही विल गो फॉर हिज फेवरेट। सो expect Maguire to be there, expect Rashford to be there if he was already there पहले। देखो जो भी टीम उसको यूरोज में इतना आगे लगी थी ना, 90% लोग उसमें से ही होंगे। ही इज नॉट गोइंग टू टेक रिस्क्स। प्लीज सेल एडी एंड रिप्लेस हिम विद सम लाइक मिकेलो मुड्रिक। मिकेलो मुड्रिक भाई, आई थिंक ही इज अ विंगर। एडी को चलो देखते हैं। Indica, because sometime Gabriel, a little bit competition will be good. Competition is very important, but I think Gabriel has competition. उसको पता है बेन वाइट उसके गले पे है सेंटर बैक के लिए, बट ओवरऑल हैप्पी विद गैबी। आई लव गैब्रियल मैन। CDM लेफ्ट हो चुका है। Who do you think will finish third and fourth in the Premier League this season, in my opinion? I think third, Liverpool, and fourth, I think surprisingly United. मैं सोच रहा था यूनाइटेड सिक्स से ऊपर आ ही नहीं पाएगी इनिशियली, बट आई थिंक दैट उनका जो डिफेंस पे फाउंडेशन बन गया ना, I think that's going to be a huge thing. Newcastle can also be fourth, man. It's very difficult, and I'm so happy we picked this season to be so high. अगर हम इस ये कचरे में फंसे रहते ना, फोर्थ थर्ड फिफ्थ सिक्स वाले में, ओ हो, मैं तो स्ट्रेस से दिमाग खराब हो जाता ब्रो। Sorry, Neeraj says if Newcastle finish fourth, they will make things difficult for City. If Newcastle finish in the Champions League, they will spend more than City. देखो भाई, न्यूकासल की जो है ना प्रोसेस, इट विल गो लाइक सिटी। सिटी ने भी बहुत कचरे प्लेयर्स साइन करे थे, नॉट कचरे बट लाइक सम लो की प्लेयर्स आल्सो दे साइन। डू यू रिमेंबर नाइजल डियोंग उन्होंने साइन किया था, रॉकी सैंटा क्रूज साइन किया था, रॉबिनो चलो हाई प्रोफाइल साइनिंग थी, ज़ाबालेटा साइन किया था उन्होंने। इवेंचुअली दे हैव बिल्ट अप ऑन दिस एंड देन दे गो फॉर द बिग प्लेयर्स। Newcastle already have those sort of stabilizers in that team, and वो मैन सिटी से eventually next few years में consistently spend करेंगे। अगर न्यूकासल चैंपियंस लीग में घुस गई ना, they are not going to leave it. It's going to become like City only. जैसे सिटी एक बार चैंपियंस लीग में घुसी है, it has never dropped out of चैंपियंस लीग तब से, and it's going to be the same with Newcastle. So all other ये जो ट्रेडिशनल टॉप फोर टॉप सिक्स थे, बिग सिक्स बिग फोर, they have to buck up their socks. Back up to Jesus next season. यार प्रायोरिटी तो नहीं है, क्योंकि जेसस काफी है, ही इज यंग आल्सो, एंड आई थिंक आवर मैनेजमेंट ट्रस्ट एडी इनफ, सो मेरे को तो नहीं लगता स्ट्राइकर आएगा कोई नया। CDM इज वेरी ऑब्वियस। CM, आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 years, yes, CM will also probably be coming, because जाका को फेज आउट करना है। एंड लेफ्ट विंग,
वही लेफ्ट विंग राइट विंग वाला बंदा जो साका और मार्टिनेली की जगह खेले, इन दोनों में से कोई इतना ज्यादा खेल रहे हैं लोग, कोई इंजर होगा. As a neutral fan, I think Arsenal are the serious title contenders for this season. I think so too, but I don't think we will win it. But that's the good. Okay, this comes to the question. Ashbin says we need to kill the games faster and maintain the intensity after scoring the first goal. That is true, yeah. Ashbin, that's a very good point. We start very fast, but then we slow down, and we slow down massively. यार क्या drop off होता है? When we played against Liverpool, we let them come back. When we played against Leeds, we barely escaped with the win. Southampton के against we dropped points. Nottingham ने कुछ करा नहीं तो चलो छोड़ो. PSV के again we did not even arrive at that game. And कल का भी game against Zurich, I hope we just Nottingham Forest को जैसे dispatch कर दिया था, we dispatch Zurich also. तो यार वही है कि मतलब उफ, as long as we, as I agree with Ashwin, जैसे ही हम game start करते, we need to finish games. Nottingham Forest was a good win for us like that. Need to learn to maintain intensity. I think same ही बात है जो अश्विन कह रहा था, for at least 70 minutes. Once Partey's injuries start becoming more often, then slowly we will, हाँ, shipping him out करना ही पड़ेगा यार. वो जब इंजरी उसकी हो जाती है ना, हमारी टीम खोखली सी हो जाती है पीछे. Shaka can give 3 more years. I completely agree, Shauryadeep. Surya Singh, I said this season. This season के लिए top center backs have to be Lisandro Martinez, Saliba. Not no particular order. Saliba, Lisandro Martinez. I'll go for this Sven Botman. Sven Botman from Newcastle, very good center back. Who else I'll tell you? Joachim Anderson in Crystal Palace, very good center back this season. और कौन है यार, मतलब मेरे हिसाब से तो यही है दिस सीजन. या यूर राइट, वीवीडी तो इस सीजन तो नहीं. वीवीडी इस सीजन कुछ और ही हो गया उसको. बट आई वाज टॉकिंग ओवरऑल इन द प्रीमियर लीग ओवर टाइम फॉर्म को हटा के. एवरीवन प्लीज हिट लाइक, थैंक यू रोहन. 2 FA Cups और 1 Premier League. 1 Premier League, man. It's been too long. FA Cup को तो हम ऑलरेडी, हम we're the kings of the FA Cup already. It's been too long since a league title. And पता है क्या होता है यार, when you win a Premier League title, no, एक different kind का swagger आता है because it's a thing you won over consistently from 39 weeks. Well, 39 weeks में you've performed in a way which guarantees you that you're the best of the rest. So I think I would choose 1 Premier League title. It's been too long, man, जब से हम last Premier League title जीते हैं. Diaz, Van Dijk, Silva, Varane. Varane is also really good this season, though उसकी कुछ injuries हुई हैं. But I think that Martinez-Varane partnership is really great. Ruben Diaz, you like? That's really good, man. Which countries in the World Cup? I've already said. Just for Messi, Argentina. Otherwise, France. I think France will win. I think we can still compete for the title this season if we think we can do good, important business in winter. Oh yeah, yeah. This whole thing, no, that our entire season depends on January is a very problematic notion. I know it's you're right. It's a very problematic notion, man. Teams should be ready at the start of the season, and January should only be for times when something unforeseen happens कि आपका player पूरे साल के लिए injure हो गया. तो यार, I don't know, man. I think our team is good enough for a top four this season, not good enough for a title. जनवरी में कोई ऐसा प्लेयर निकलेगा नहीं यार, और अगर कोई निकलेगा we'll have to pay a lot of money. Which trophy do you think we can win this season? I think we can win the Europa League for sure. But now, no, actually, considering जो teams drop करी हैं Champions League से Europa League में, पता नहीं यार. First priority is finishing top of the group. Which trophy do you think हो गया? I have a feeling we'll be adding another trophy to our cabinet this season. You know what? थोड़ा negative है. I don't think we'll win anything this season. But I think we'll win 2 trophies next season. I think next season we'll do a double for sure. For sure क्या मतलब मेरा guess है. I don't think इस season हम कुछ जीतेंगे. I think इस season में हम एक फाइनल में डेफिनेटली पहुंचेंगे. अब चाहे वो FA कप हो, चाहे लीग कप हो, चाहे यूरोपा हो. आई थिंक वी लूज अ फाइनल. एंड वही है यार, डिफिकल्ट मोमेंट्स जो कह रहा था कोई कि वी नीड टू बिकम मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, ये डिफिकल्ट मोमेंट्स ही मेंटालिटी मॉन्स्टर्स सिखाएंगे. हम एक टॉप 4 रेस से निकल गए. दैट हैज मैच्योर्ड अस टू स्टार्ट वेल, बी लिटिल मोर फोकस्ड इन आवर गेम्स. Maybe if we lose the final, that might not be
I mean, it'll be a heartbreaking thing. मैं तो रो दूंगा. But in the long term, maybe it's not the worst thing that can happen to the team. If we win, of course, winning though is the absolute best. But I don't think we'll win anything this season. Okay. What about Brighton? That manager is something else. Deserby, yes. But यार बहुत हमने देखा है. Nuno at Wolves was also very good. Where is Nuno now? I think he's managing in the Middle East. So yeah, कुछ managers work out really well, but they don't stand too long. Maybe वो Spurs वाला stint Nuno के लिए ठीक नहीं था. If you can take one player from this United and Chelsea players in their prime for Arsenal, which one will you choose? In the current United squad, say I will choose based on need or just the player. If you saying based on it, Casemiro, सीधा Casemiro लाओ भाई. And if you're choosing just ऐसे ही player from United, I will take. क्या बोलते हैं लोग? कौन लोगे तुम लोग यूनाइटेड से? If you had to take one player from United, I would take Lisandro Martinez, 100%. Varane maybe, but Varane is injury prone, so Lisandro. Otherwise, need based, 100% Casemiro from Chelsea. Hmm. I know उसका फॉर्म भी बहुत खराब है, but maybe Kai Havertz. और actually you know what? No, we'll take Mason Mount, man. Mason Mount जैसा प्लेयर बहुत कम होते हैं, बहुत कम प्लेयर्स होते हैं Mason Mount जैसे. Otherwise, Reece James. Chelsea के इतने सारे players, I would take Chelsea as a really really good squad. The thing about Newcastle is they have not started spending, and that is true, which is I think which is a deliberate thing, Rohan, because if they start spending like City, then other clubs will just think इनके पास तो बहुत पैसे हैं तो कुछ भी देने को तैयार है. Let's get as much money from them as possible. I'm a Neymar and PSG fan, very good. And I don't know why I love Arsenal after Neymar retirement. I'm going to support Arsenal. Hope Arsenal finish at top four. Hope Neymar comes to Arsenal, bro, and then your life will become much easier, where you can support both Neymar and Arsenal. Our first 20-25 minutes is the best in the league. If we can be more clinical, game over. Yeah, that is the thing. If we can score 2 goals in the 25 minutes, then it's game over. If we score 0 goals in the first 25 minutes, I can say we are more than likely to lose. तुम्हारी intensity काफी drop होती, but I think this will come with experience only. Fabian Schär has been very impressive as well. I agree, Surya. He's been really good again. कोई Botman के साथ जो pairing है. Answer me, if Arsenal wins Europa League and finish second in the EPL, will you consider that successful season? If we win the Europe, if we are in the Champions League anyhow, it's a successful season. That is the bottom line. मेरे लिए successful season होता last season से 10 पॉइंट आप आगे कर लो, 10 से 12 पॉइंट successful season. Because यार sometimes progress इतनी linear नहीं होती कि आपने पहले 8th finish किया, फिर 6th finish किया, अब 4th finish करो, फिर eventually 1st finish करो. Sometimes teams around you also are trying to get better, and sometimes कुछ teams get much better than you. So आप points के हिसाब से देखो. For me, कुछ जो games थी last season, बर्नली लास्ट सीजन थी. ब्राइटन एक हार गए थे, ब्रेंटफोर्ड से एक हार गए थे, क्रिस्टल पैलेस से एक हार गए थे. बहुत सारी जगह ऐसे हमने पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए थे जो हमें नहीं करने चाहिए थे. तो if we had won those games, maybe 9-10 points, if we improve our points tally by 10 points, it's a successful season. If we get into the Champions League, the season is an absolute success. Main thing during World Cup break would be fitness of those players. El Neni Cedric can be the most when time comes. That is true. Title challenge is not about your first 11, but it's also about the people on the bench. Europa League or finishing top 3 in the EPL? Europa League. अगर दोनों में से choose करना Europa League. Trophy will be invaluable for this young group of people. It will also be Arsenal's first European trophy. So कोई भी यूरोपा लीग जीते स्क्वाड वो बहुत ही अच्छा है. गाइस हम 7-10 मिनट में रैप अप करेंगे, 1.5 घंटा होने वाला है, ठीक है. आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन. Best CB this season, Saliba, Licha, Shah, Joaquim Anderson. Also big shout out Dan Burn. भाई Dan Burn से मेरे को ना पर्सनल खुंदस है ना. दक्ष भाई, I think we can still win a title this season. Actually, I think it all depends on squad fitness after World Cup. World Cup is going to be the most crucial thing कि यार कौन क्या what happens. Because some person can get injured, and it's not only that they get injured during the World Cup, they can get injured after the World Cup because you're not getting a break. Lisandro, yes.
I think why Chelsea Academy is so damn good. They put a lot of money in it. It is their source of income. From United, Licha any day, Casemiro were very good, but people do not rate Partey, how excellent he is. It's okay, man. I think as long as people don't rate Arsenal players, it's great for us. जितना लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं उतना ही हम बेटर होते हैं. So yeah, you will take Neymar in Arsenal? Yes, 100%. Why will I not take? Neymar is one of the best players in the world for me. If yes, which player will he replace in the recent starting 11? I think what will happen is if Neymar comes, let's say, अब ये तो बहुत सपने वाला सिनारियो हो गया, बट अगर नेमर आता है, he'll play left wing and Martinelli and Jesus will rotate on the up front. Martinelli center forward move कर जाएगा. जैसे Henry was also a left winger for Arsenal first. नहीं, आर्सेनल के लिए नहीं, यूवे के लिए वो लेफ्ट विंगर था. आर्सेनल में स्टार्टिंग में खेला, देन ही मूव टू सेंटर फॉरवर्ड. सेम विद वैन पर्सी एंड आई थिंक मार्टिनेली का भी यही ट्रेजेक्टरी होगा. इवेंचुअली विल प्ले फॉरवर्ड. About the title, no true Arsenal fan is saying we will say that season. Rivals fans is putting us under pressure and at the end when we lose, हाँ भाई यही होता है, यही होता है. हमने ना कहा है कि we will win the title. I mean, it's great to be in this position. People will say, oh, Arsenal might win the title ना, and we'll be like, नहीं नहीं यार. But Arsenal might win the title ना, हाँ मतलब we're in that position, so Arsenal will win the title ना. And then in the end when we don't, hey, Arsenal didn't win the title. यही होता है यार ये सब लोग. Don't take Twitter and social media seriously. And why are they not using academy graduates in the team? Because they bring in new managers all the time, and new managers have their own sets of players that they want, and they don't have time to go through the academy players and see ki kaun is a good fit. But that's not true. I mean, Reece James, academy player, Mason Mount, academy player, unki sari loan army. So many of them can come back and play, but who knows, man. उन्होंने हमारा भी एक लिया ना, Omari Hutchinson, they've taken from Arsenal. Let's see how it goes. I think our progress in the last two seasons has been massive. I agree. Big agree. Little bit on mentality, which will become okay. And then we need to slowly add excellent players in our team to become a top team. Yes. Nah, Neymar not possible. 100% bro. He's not going to come to Arsenal. If you want any player from the world who can come to Arsenal and that will make me happy, that's Thomas Muller. Kyun? I don't know. I just love the player. Arteta does not want any soap opera. That is yes, that is true. If you have to conquer the Euro by Arsenal, for which manager will you go for? Pep, Zidane, Mourinho, or Klopp? I will go for Mikel Arteta to conquer Europe. Maybe we'll conquer it, maybe we won't. But if you're asking me for these people, of course Pep, because we'll play the same. Hey, I guess I'm late today. What do you think about Arteta leaving for Barca in the next 4 or 5 years? If we win a big trophy, then yes. If we don't, no. Although I think Arteta is also not a long-term manager, and I don't think he'll leave for Barca. I think he'll leave for City. Depends on what happens with Pep, to be honest. Okay, finally सारे questions हो गए. Okay, boys. अच्छा, before I end the stream, कोई ऐसा है जो mod बनना चाहता है? I am asking this and I am telling you again. Mod बनने के लिए I don't expect you to be for every stream. Of course, आपकी भी life है, आप जिए, आप जो भी करें. But I expect कि आप most streams में होंगे ताकि आप spam को थोड़ा monitor better कर पाएँ. So if there's anybody, please comments में लिख दो कि यार I want to be a mod and I'll make you a mod. We already have two, Lucky Reds and Rohan. So if anyone else wants to be a mod, मैं सिर्फ 2 और mods बनवाऊंगा, ठीक है? Okay, Shaurydeep says, please. Oh, then he's retracted that message. Shaurya, आपको बनना है नहीं बनना बता दीजिए मुझे. Arsenal under 23 better than Chelsea under 23? हाँ यार, नहीं, actually नहीं. Chelsea's academy is better, but we happen to have a lot of good players and we can beat Chelsea के under 23s pretty comprehensively, but they have a good under 23. Okay, so when we say what do we need to mount a challenge, मैंने खुद का आंसर तो दिया नहीं. I'll give this answer and then we'll end the stream. By the way guys, मैं अपना ट्विटर एंड अपना इंस्टाग्राम में मैं उतना यूज़ नहीं कर रहा. मैं अपना ट्विटर डाल देता हूँ. इसको प्लीज़ फॉलो कर लो. अगर आप लोगों को मॉड बनना है या कुछ करना है या आपके कुछ भी सजेशंस हैं तो आप मुझे इस हैंडल पे ट्वीट कर सकते हो या डीएम कर दो. And I will take your ideas into consideration. If you ever want to come onto the channel as a guest, that can also be made possible. But after we
talk for a little bit and I get to know you. तो ये देयर यू गो, अगर आप एट ग्लोबल वॉफल्स को फॉलो करोगे, you can DM me, you can tweet at me if you have ideas for videos, if you have ideas for live, if you have topics to discuss, we can all do that. Okay. um Manish Jyoti Dole says, Arsenal Hindi says, love from Nepal, I want to be, what did I need to do? um DG Ayush, okay, so I'll make all three of you. DG Ayush, all you need to do is whenever there is spam, and you will know what is spam. Some people are hot girls wanted in your area. तो जो लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स डालते हैं, आप उनको प्लीज बैन कर दो, म्यूट कर दो, टाइम आउट कर दो, जो करना है कर दीजिए. सो डीजी आयुष, यू आर ए mod. Manas Jyoti Dole, you are also now a mod, and and Arsenal Hindi, you are also a mod. So for now, I think 5 mods is more than enough, भाई. मतलब मेरे स्ट्रीम पे तो 15 लोग आते हैं और 5 तो मॉड ही हैं. और क्या चाहिए? तो खैर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. और कोई कमेंट्स हैं? संतोष, लव फ्रॉम नेपाल, लव फॉर यू फ्रॉम डबलिन माय ब्रो, एंड फ्रॉम इंडिया. Nana, sorry, Dakshpriya, someday, not now. कोई बात नहीं शौर्य. I will keep coming to your stream. I will like nothing more than that. Please keep coming to my stream. I would love it. Thank you to everyone who's been here for 1.5 hours, and thanks for everyone who's been here for 1 minute also. It is absolutely fine, and I hope you have a good night today. अभी तो चैंपियंस लीग आई थिंक शुरू हो जाएगा कुछ टाइम में, राइट? अभी कितने बजे होंगे उधर? यहाँ 5:30 हैं, तो 11 बज गए होंगे. So happy Champions League night to you guys. Kal, everyone is a mod. So yeah, कल यूरोपा लीग है. उसके लिए मैं सोच रहा हूँ लाइव करें या क्यों, बिकॉज यार देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट द यूरोपा लीग. मैं सोच रहा था बात करें, बट व्हाट इट इज, सिंपल सी बात है. रोटेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम खिलानी पड़ेगी, एंड टॉप ऑफ द ग्रुप फिनिश करना है. दैट इज द प्रीव्यू. ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया. इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, ना हमें कुछ सोचना है. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. वीडियो को लाइक कर देना इफ़ यू नॉट लाइक्ड इट, एंड लीव अ कमेंट इफ़ यू वांट टू से समथिंग. मैंने अपना ट्विटर तो दे ही दिया है. फॉलो मी देयर, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी आइडियाज, एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट मी और टॉक टू मी अबाउट, बता देना. रोहन यादव, वॉच लॉन्ग. नहीं यार, यहाँ पे ना इशू है कि आई डोंट हैव अ टीवी हियर बिकॉज यू नीड अ लाइसेंस, एंड जो स्ट्रीम्स मुझे मिलती हैं वो उतनी रिलायबल है नहीं. मेरे को बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, एंड आई डोंट थिंक वो हो पाएगा. सो इफ आई हैव टू वॉच अ मैच, आई हैव टू गो टू अ बार एंड वॉच अ मैच. सो आई डोंट थिंक अ वॉच लॉन्ग इज पॉसिबल फॉर नाउ. Maybe if I get a subscription eventually, then yes. What about the new signing rumor? Facundo Torres की बात हो रही है, नितिन, but as far as I can tell, nothing has happened. तो चलो, thank you all. Ayush, Shauryadeep, Santosh, Rohan, Nitin, Manjeet, Manas, Shauryadeep again, Pranav, um, Mohammad Akhone, Jatin, all you guys, thank you so much for coming. And next time I'll put a community post again before coming live. And thank you so much. And come on, you guys. Bye bye.